स्टूडेंट, थर्ड यूनिट यानी सेली टॉपिक चल रहा है। इसमें इनकम फ्रॉम सेलीज रिटायरमेंट एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है आज। यानी टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सेलीज रिटायरमेंट। देखिए, व्हेन एन एम्प्लॉय रिटायर्स फ्रॉम सर्विस who leaves a job and joins the other, or he is retrenched, he services some special payments from the employer। यानी जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो उसे स्पेशल पेमेंट दिए जाते हैं एम्प्लॉयर द्वारा, जैसे कि ग्रेचुटी, आपका पेंशन, ऑन लीव सैलरी, compensation on retrenchment, compensation on voluntary retirement, amount from provident fund। The aforesaid receipts are treated as income from sales. However, these are exempt up to specified limit. In this connection, the provision of Income Tax Act, firstly, gratuity section 10 और subsection 10। देखिए, for exemption of death cum retirement gratuity, employees have been classified into three categories: A, government employee, any death cum retirement gratuity received by all categories of government employees or employees of a local authority is exempt from income tax in null, income tax in full, even if after retirement he takes up an appointment in a private organization. The gratuity received by him from the government will be exempt from tax। जैसे कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड बाई पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। दूसरा, नॉट कवर्ड बाई द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। सबसे पहले स्टूडेंट जो डिस्कस करेंगे, covered by the payment of gratuity act 1972। the payment of gratuity act applies to those employees who are working in any establishment, factory, mine, plantation, port, railway or shop, to any skilled or semi-skilled supervisory clerical work, and whether or not such person is employed in a managerial or administrative capacity does not include: firstly, employee of the central or state government, employees government governed by any other act or any other rules in this respect. The payment of gratuity act applies to a concern in which 10 or more employees are employed, or were employed in any day of the preceding 12 months. Exempted amount: list of the following shall be exempt। फर्स्ट, इसकी कंडीशन है 15 days सैलरी, 7 days in case of employee of a seasonal establishment,
of a seasonal establishment based on salary lasted around for every completed year of service and part thereof in excess of 6 months. यानी कि स्टूडेंट 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे। यदि 6 महीने से ज़्यादा के मंथ दे रखे हैं जैसे 7 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, तो उनको पूरा 1 ईयर मान लिया जाएगा। ग्रेच्युटी एक्ट कवर्ड 1972 में। सेकंड, 20 लाख विद इफेक्टिव फ्रॉम 29 मार्च 2018 से इसकी 20 लाख लिमिट कर दी गई है मैक्सिमम। नंबर थर्ड, ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड। देखिए मीनिंग ऑफ सैलरी, इट इंक्लूड फर्स्ट मंथली बेसिक सैलरी लास्टेड ऑन और DNS अलाउंस वेदर एज द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट। यदि इफ अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग DNS दे रखा है तो सैलरी में इंक्लूड होगा। स्टूडेंट, कंप्यूटेशन ऑफ 15 डेज सैलरी यानी ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ कंप्यूटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, यानी लास्ट मंथ सैलरी इंटू 15/26। 26 इसलिए क्योंकि 1 मंथ में 26 को वर्किंग डेज माना जाता है, इसलिए। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आता है यानी कि सी, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, यानी नॉट कवर्ड। इससे पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अब नॉट कवर्ड, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 3। देखिए, एनी gratuity received by him on his retirement, on his becoming incapacitated prior to such retirement or termination of his employment, or any gratuity received by his widow, children, dependents on his death is exempt up to a list of the following. First, 1/2 month average salary for each year is completed service. It means जैसे कि 15 ईयर्स, 10 मंथ या 6 मंथ या 11 मंथ दे रखे हैं, उसको कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा, यानी कि केवल 15 साल। जैसे कि हम कवर्ड ग्रेच्युटी एक्ट में 6 मंथ या उससे ज़्यादा दे रखे हैं उनको पूरा 1 ईयर मान लेते थे, इसमें जो कंप्लीटेड ईयर दे रखे होंगे उन्हीं को मानेंगे। सेकंड, मैक्सिमम लिमिट है इसकी 20 लाख, 20 लाख। थर्ड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड। In order to compute the number of completed years of service, only the complete year will be taken into account and the service for a part of the year will be ignored. For example के तौर पर, जैसे कि if the total service of an employee is 30 years, 8 months and 20 days, only 30 years will be taken into account for the purpose of the remaining 8 months and 20 days will be ignored. यानी जितने कंप्लीट पूरे साल दे रखे हैं उन्हीं को माना जाएगा, उसके बाद जितने मंथ दे रखे हैं चाहे 11 मंथ ही क्यों ना हो उनको इग्नोर माना जाएगा। एवरेज सैलरी, इट शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी फॉर 10 months immediately preceding the month in which the event occurs. Meaning of सैलरी इंक्लूड जैसे बेसिक सैलरी, सेकेंड DNS अलाउंस इफ़ इट इज़ गिवन एज द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग यदि दे रखा है तो DO को ऐड करेंगे सैलरी में। थर्ड, कमीशन बेस्ड अपॉन ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय।
When a gratuity is received by an employee from more than one employer is the same previous year, the aggregate amount of exemption shall not be exceed the maximum absolute limit. Further, where the employee has received gratuity in any earlier year from his former employer and received gratuity from another employer in a later year, the maximum absolute limit will be reduced by the amount of gratuity which has been exempted earlier. इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन कि वॉट एवर पेंशन is received by an employee, government and non-government, after retirement is chargeable under the head lease. If a person, after serving in India, retires and settles in a foreign country, receives a pension on account of such service, such pension shall be deemed to be accrue and arise in India and chargeable under the head lease, even he becomes non-resident in India. Commutation of pension. Sometimes the employee wants to have a lump sum payment in lieu of pension which he would have otherwise received monthly. This exempt from tax subject the following limits. जैसे कि any amount received in a commutation of pension by all categories of central and state government employees and employees any local authority undertaking is fully exempt from tax. Number 2, any payment in commutation of pension received from any other employer is exempt to the extent it does not exceed the commuted value of 1/3 of the normal pension if he also receives gratuity. The commuted value of 1/2 of such pension if he does not receive gratuity. Any payment received by an individual in commutation of pension from a fund set up by Life Insurance Corporation of India receiving pension would be exempt from income tax. स्टूडेंट आज हमने ग्रेचुटी के बारे में डिस्कस किया और पेंशन के बारे में. इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट.